हाय गाइस। तो हम कर रहे हैं बेटा आपका लॉरेंस कर्व। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे लॉरेंस कर्व और जिनी कोफिशिएंट के, बिकॉज लॉरेंस कर्व जिनी कोफिशिएंट जो है वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास दो सोसाइटीज हैं, ए और बी। ए में हमारे पास 10 लोग हैं जिनकी 15 रुपए की इनकम है, रुपीज, डॉलर्स, whatever. 10 people who have 60, 10 people who have 60. So that's A. B has 10 people with 20, 10 people with 45, 10 people with 70 income. So we have to, in the first part, calculate Gini coefficient and coefficient of variation in society A and B. Okay, so let's do this. तो हम सबसे पहले सोसाइटी ए की बात कर रहे हैं. सो लेट मी राइट डाउन फॉर ए. ए हैज 10 पीपल विद 15 income, 10 people with 60 income, and 10 people with 60 income. I could have just written 20 people with 60 income, but then doesn't matter because it may confuse some people. Let's talk about coefficient of variation. Now, coefficient of variation technically आपके syllabus में नहीं है क्योंकि आपको इस साल में कराया नहीं गया है. But you know, how do you actually, can give you anything from the syllabus that you've studied so far? So coefficient of variation is something that you have been assumed that you studied earlier in your Delhi University career. So which is why you're supposed to know the formula. So coefficient of variation is standard deviation upon mean. Standard deviation होता है बेटा each deviation का from mean square upon the whole population sample size n. सबसे पहले हम निकालते हैं मीन. मीन इज हमारे पास 10 लोग हैं विद 15 ऑफ इनकम, सो 150. 10 पीपल विद 60 ऑफ इनकम, 10 पीपल विद 60 ऑफ इनकम. तो मेरे पास ये सारे लोग हैं डिवाइडेड बाय 30. 30 इज माय होल पॉपुलेशन, सो माय मीन कम्स आउट टू बी 1350. राइट. स्टैंडर्ड डिविएशन, 10 पीपल हैव 1350 अपॉन 30, ये आता है 45. So for 10 people, deviation is 45 minus 15, which is 30 square. इसको मैं एक एक करके भी कर सकती हूँ. So instead of saying 10 people, I do person 1, person 2, person 3, person 4, so on and so forth. So for person 1, my deviation is 45 minus 15 square. क्योंकि उसकी income है 15 but mean है 45, तो deviation कितना हो गया? 30 square. ऐसे ही second का भी 30 square है, third का भी 30 square है. For the first 10 people, it's 30 square, so which is why I wrote it like this. Similarly, for the next 10 people, it's 60 minus 45 the whole square, right? For the next 10 people, again, it's 60 minus 45 square. And we divide this whole thing by 30. This is my standard deviation square. क्योंकि ये under root है, ये मैंने अभी under root नहीं लगाया, मैंने इसको square कर दिया. So when you solve this, beta, you get standard deviation to be equal to 21.21. I'm not getting into the math. You can just take out your calculator and do this, which means coefficient of variation comes out to be 21.21 upon 45, which is 0.47. Okay, तो ये तो आपका आ गया coefficient of variation. Similarly, आप coefficient of variation निकाल सकते हो population B का. B में हमारे पास given है that 10 people have an income of 20, 10 people have an income of 45, and 10 people have an income of 70. Okay, इसका आपको, I'm not going into the calculation here. I'm just simply writing the answer for you to cross check. You can pause and calculate. So the average here is also 45, which means mean is 45. Standard deviation is 20.41. Coefficient of variation is 20.41 upon 45, which is 0.45. Okay, so that is our coefficient of variation. हमारे को उसने बोला है Gini coefficient and coefficient of variation, which means the second thing we do is we calculate Gini coefficient for population A and population B. So I'm just going to go ahead and erase all of this so that I can do the Gini coefficient now. So Gini coefficient technically is the, if you recall from the diagrammatic point of view, Gini coefficient is area A upon area A plus B. तो हम क्या करते हैं, हम एक perfect equality की वो बना लेते हैं line. So if this is my box, then this is my perfect equality. Straight line है of course ये, मेरी straight बनी नहीं. This is a straight line. And this may be our area, our line of inequality. So this is area A, this is area B. So Gini coefficient is area A upon A plus B.
राइट। तो इसमें हमारे पास पॉपुलेशन जो गिवन है उसके तीन वो बनेंगे, सो वी 10 10 and 10, सो वी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन 5 पार्ट्स आई कैन डू इट इन 3 पार्ट्स, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर्व बनाएंगे तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। सो अगेन लाइक आई सेड, आइडियली दिस शुड नॉट बी asked in the questions because the setup is not given to you, but it is what it is. तो मेरे पास इंस्टेड ऑफ परसेंटेज टर्म की 0 to 100% पॉपुलेशन, बिकॉज 10 of 30 people is like 1/3, which is 33.33. Calculation becomes really difficult. We're going to ease it out. 100% of the population is 30 people, right? So I have entirety of 30 people who can have a higher, the total income they can have is 1350, right? The first 10 people have an income of 150. So I will take 10 here and I will take some 150 here. So ideally 10 people should be having how much income? According to this, जो हमारे पास फर्स्ट 10 लोग हैं उनकी इनकम कितना होना चाहिए, परफेक्ट इक्वालिटी के हिसाब से कितना होना चाहिए, फिर फर्स्ट 20 का इनकम कितना होना चाहिए परफेक्ट इक्वालिटी के हिसाब से, और ऑल 30 का इनकम कितना होना चाहिए उसके हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से। परफेक्ट इक्वालिटी के हिसाब से 1350 जो है वो इक्वली 30 लोगों में डिवाइड होना चाहिए, तो हर एक के पास 45 रुपीज का इनकम आना चाहिए, राइट। हमने अभी निकाला ना इसका मीन इज 45। सो according to perfect equality everybody should have an equal income, which means the first 10 people should have an income of 450। 10 into 45, 450। बट उनके पास इनकम है कितनी? एक्चुअली इनकम दे हैव इज ऑफ 150, राइट। सो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया मेरी लाइन का, right? I have my first point of my line. 20 people, first 20 people should have an income of 45 plus 45, 90 into 20, 90, right? So the point is, no, let me not do it like that. So first 20 people should have an income of 45 into 20, which is 900. So पहले 20 लोगों के पास perfect equality के हिसाब से इनकम होनी चाहिए थी 900, बट पहले 20 लोगों के पास एक्चुअल इनकम कितनी है? 600 प्लस 150 विच इज 750। तो मेरे पास यहाँ पे 750 का एक सेकेंड पॉइंट आ गया अपना। एंड ऑफ कोर्स द इंटायरिटी ऑफ 30 पीपल हैव 1350 ओनली बिकॉज दैट्स द टोटल इनकम इन द सोसाइटी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द इनकम दे हैव, दिस इज द एवरेज इनकम विच दिस शुड हैव हैड, विच इज 45। सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। पहले 10 लोगों के पास इनकम जो होनी चाहिए थी वो थी 45 इंटू 10, 450। वो उनके पास इनकम आई कितनी? 15 इंटू 10, 150, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी ऑल्सो डू क्यूमुलेटिव इनकम एंड क्यूमुलेटिव आइडियल इनकम तो होनी चाहिए थी 45, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 10 है, ये है 45 इंटू 10, और यहाँ पे है 45 इंटू 10 प्लस 45 इंटू 10। So these are the numbers we have taken. So 900, this is 450, which is your perfect equality, 150 and 750, which is your inequality. So I have this first point here, which is a straight line further, and a straight line here. अब ये स्ट्रेट लाइन से क्या होता है, मेरे पास ना नीचे के ट्राइंगल बन गए हैं। सो इफ यू लुक एट दिस एरिया बेटा, लेट मी जस्ट मार्क इट आउट, दिस area is a triangle, right? Let me call this area 1. So मेरे area 1 का क्या है? ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें दिख रहा है 10, हाइट हमें पता है 150। सो दिस बिकम्स माई एरिया 1, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं एरिया नीचे का निकालूंगी, फुल एरिया निकालूंगी, उससे मेरा एरिया ए आ जाएगा। ओके, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, वेट, ओके, जस्ट बियर विद मी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ऐसे ही मैं एरिया 2 को निकाल सकती हूँ, एरिया 2 को मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये एक पिंक एरिया है विच इज माई एरिया 2। ये ना स्ट्रेट लाइंस हैं बीच में। स्ट्रेट लाइंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास सेक्शंस डिवाइडेड है ना, विच इज एरिया 2। और ऐसे ही मेरे पास ये एरिया है विच इज एरिया 3, ठीक है। तो एरिया 2 कितना है मेरा? Area 2 is, I need to do half again into base into height.
Base is 20 minus 10, which is 10. And height is, this is 450, this is 150. So this is 450 minus 150, which is 300. So my area is 300 into 10 upon 2, which is 1500. Okay, this is my pink area. ऐसे ही मैं अपना पर्पल एरिया निकाल सकती हूँ, which is a rectangle, which is 20 minus 10, which is 10, into 150, which is again 1500. ठीक है, ऐसे ही मैं अपना ये थर्ड पार्ट का एरिया निकालूंगी, which is your this triangle and this rectangle. So let me call this area 4, let me call this area 5. So area 4 becomes half into base. Base is now what? Base is 450. ये वाला जो point नहीं, base is not 450, this was 150, this was 450, this 20 people का was 750, sorry, this was 750. तो ये मेरे पास 750 है, so मेरे पास base is 750. So I have base as 30 minus 20, which is 10, and the height is 1350 minus 750, whatever that is. 1350 minus 750 should be 600. Let me just calculate. 1350 minus 750, yeah, 600 into 10 divided by 2. So this area 4 becomes 3000, and the area 5 becomes the rectangle, which is 450 into 10, which is 4500. So area जो under the red line है, you know, the entirety of area under the red line, let me call that area B, वो area B ही होता है, which is the area under the red line, is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So which is 750 plus 1500 plus 1500 plus 3000 plus 4500. Right, which it comes out to be 11,250. Let me just do that again, 1 minute. So 750 plus 1500 plus 1500 plus 3000 plus 4500 is 11,250. So and area A plus B is what? Half into base into height. Base is 30, height is 1350. So which is 1350 into 30 divided by 2, which is 20,250, 20,250. So area A becomes 20,250 minus 11,250. So 20,250 minus 11,250, which is 9,000. Okay, so which gives me my Gini coefficient? Which gives me my Gini coefficient right here? The Gini coefficient that I have is A upon A plus B is the Gini coefficient. So A is 9,000, A plus B is 2,250. ये हमारा आ गया Gini coefficient, which is 0.44. And that's your answer for A. Okay, and you will do a similar exercise for the country B. For the country B, also, when you do the similar exercise, ये मेरी है income जो actually है, और जो income होनी चाहिए वो है 45. So actually है, so I have 20 into 10, 45 into 10, 70 into 10. Cumulative कितनी होगी? 2000, 2000 plus 4500, 6500. And then this is total is 1350. 2000 नहीं guys, 200, sorry. 200, 650 and 750. And होनी कितनी चाहिए थी? Actually 45 into 10, which is 450, 900 and 1350. Right? You do the same thing, you do the same exercise, draw the same way. आपने बॉक्स बनाया, परफेक्ट इक्वालिटी बनाई, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 1350 है. Right, you divided into 3 parts, 10 and 20, 10, 20. आपको पता है ये वाला पॉइंट आपका जो है वो है 450, ये वाला जो पॉइंट आपका है वो है 900. लेकिन आपको जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जो आपको पॉइंट्स चाहिए, वो यहाँ पे है 200, यहाँ पे है 650 एंड वहाँ पे है 1350. सो यू हैव 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 स्ट्रेट लाइन. तो आपके पास क्या एरिया आ गया? एरिया 1, 2, 3,
4 and 5. सेम वे हम निकालेंगे. एरिया 1 इज, मैं इसको भी मार्क कर देती हूँ, ये है बेटा हमारा 200 और ये पॉइंट हमारा है 650. So area 1 becomes half into 10 into 200. Area 2 becomes half into 250. Half into, no, 450. Half into 450 into 10. And area 3 becomes 200 into 10. Area 4 becomes half into 1350 minus 650, which is 1350 minus 650, which is 600. No, 1350 minus 650 is not 600, it's 700. 1350 minus 650. 700 into 10, and area 5 becomes 650 into 10. So this then is 1000, 2250, 2000, 3500, 6500. So my area B becomes cumulative of all of this, 1000 plus 2250 plus 2000 plus 3500 plus 6500, 15250. Area A plus B is, we know already, half into 30 into 1350, which is something we calculated here, 2250, 20,250. So area A comes out to be 2250 minus 15,250, which is 5,000. So my Gini coefficient, guys, becomes what? Gini coefficient becomes 5,000 upon 20,250. No. 2250, right. So 5,000 divided by 20,250, which is 0.25. So जिसका Gini coefficient जितना बड़ा होता है उतना ही, so imagine, अगर Gini coefficient बड़ा तो area A बड़ा है ना, because Gini coefficient is area A upon A plus B. So higher A implies more inequality. ये तो आपको समझ में आ गया डायग्राम बना के. तो इसका मतलब जितना मेरा Gini coefficient हायर है उतनी ही मेरी इनइक्वालिटी भी हायर है. And we can see that. You see, here these people are at perfect this thing and 20 is more than 15. यहाँ पे क्या है कि rich and poor का gap ज़्यादा है. एक 15 पे है तो दूसरा 60 पे है. There's a big gap. But इसलिए inequality here is also higher. But here the gap is not that big, which is why the inequality is lower. Right? But there are people who are at the middle income population also. Not everybody is either rich or poor. So this, guys, answers our first question, or the question 1A part 1, which is your calculate Gini coefficient and coefficient of variation. All right, what can be said about inequality rankings? We've already discussed that. Calculate the head count in society A and society B. This I'll do here only. अगर हमारे पास उसका जो वो है हेड काउंट का जो हमारा पावर्टी लाइन है वो है 50, तो हेड काउंट में क्या करना है, 50 से कम के लोगों को ऐड करना है. ए में है 10 लोग क्योंकि बाकी सबका 50 से ऊपर है. बी में है ये 10 और ये 10. सो हेड काउंट इज 20 हियर एंड 10 हियर. So country B, which is faring better in Lorentz curve, is actually faring worse in head count ratio, which is why Gini coefficient is much better than Lorentz curve. So this, guys, is your another one. If you look at the B part, draw Lorentz curve and calculate Gini coefficient. इसमें भी हमारे पास people दिए हुए हैं 100, 200, 300, 400 people, and the income who are and the people who are earning the. अच्छा, first set represents income. So in the part 1, 125 people earn 100, 25 people earn 200, 50 people earn 300 and 25 people earn 400. तो इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो जैसे हमने पिछले वाला किया. You will have to calculate, guys, the area under the curve. Straight lines बना के उसके बीच में triangle formula लगा के calculate the area under the curves.
So that's your Lorentz curve and Gini coefficient numericals of Dev Eco.